Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Okay, this lab has been modified as per our requirements because हमें इस लैब में एज अ फीडबैक जो है वो वीटॉल ट्रेनर की नीड थी उसके बेसिकली इनकोडर के फीडबैक की. So what we have done here is we have already made our altitude control. Uh, yeah, सिस्टम हमने बनाया था ऑल्टीट्यूड कंट्रोल के लिए. Using that lab, using that system, what we are going to do is हम explain के साथ उसे इंटरफेस करेंगे और explain के साथ इंटरफेस करके आपने जो अपने VTOL की सेटिंग्स की थी उसका जो ट्रांसफर फंक्शन बनाया था we will use that in this lab. और उसमें हम लोग जो है वो कुछ इनपुट देंगे और कोई भी हेलीकॉप्टर और अ प्लेन, ठीक है, और उसकी बेसिकली उसका ऑल्टीट्यूड कंट्रोल करेंगे. ओके, नाउ हमें फीडबैक जो है वो एक्सप्लेन से मिलेगा एज इन टर्म्स ऑफ इनकोडर और फिर उस हिसाब से हम लोग वी कैन बी एबल टू कंट्रोल और एयरक्राफ्ट्स डायनेमिक्स. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को LabVIEW इंटरफेस फॉर आर्डिनो की जो लाइब्रेरीज थी वो मैंने इंस्टॉल करवा दी थी, ठीक है. और उसके बाद जो आप लोगों को ये लीफा बेस का जो कंट्रोलर है ये अपलोड करना भी मैंने आपको बता दिया था आर्डिनो पे. सो यहाँ पे obviously we are not going to use Arduino because we don't have any physical interface for that. So what we're going to do is I will give you the program. ठीक है, we already have our altitude control program with us. So इसमें आपके दो क्या कहते हैं लैब सेक्शन के जो दो आप लोगों को चेक पॉइंट्स फेस करने हैं वो है मेजर द वैल्यू ऑफ योर एल्टीट्यूड ऑफ योर एयरक्राफ्ट विच इज़ ईजी. वी ऑल नो के वो उस एरे में से आपने जो है उसे एक्सट्रैक्ट करना है एंड कंट्रोल द ऑल्टीट्यूड यूजिंग LabVIEW प्रोग्राम. ओके, so let's move on. यहाँ पे I will tell you the required changes. We don't need this whole Arduino interface. Even if you leave it there, there's no issue really because it will always run as well. So जैसे कि हमने वो altitude control किया था, if we have that here, that was lab 9 I guess. Yeah, so you see just like in this lab we have interfaced or explained with this port और ये एक पूरा इंटरफेस हमने डिज़ाइन किया था. इस इंटरफेस को यूज़ करते हुए we have our altitude and pitch set point and everything here. So yeah, this was designed for a plane, okay, for an airplane. Now what you're going to do is because we are moving on towards VTOL, so आपको vertical takeoff करवाना, so you will need to interface it with an helicopter, okay, and उस helicopter की basically आपको altitude जो है वो set करना है. We won't need our pitch, we won't need roll, and we won't need yaw at all. All we need to do is have a set point for our altitude. तो इसका ज़रा इंटरफेस हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ट्रांसफर फंक्शन PIDs जो हैं वो गेन्स वगैरह लगे हुए थे और उसका जो ऑल्टीट्यूड था उसका सेट पॉइंट हम लोग यहाँ से चेंज करके एंड उस हिसाब से हम लोग उसको अपना इनपुट देते थे. सो you're going to need that and just paste it here. ओके, और उसको इंटरफेस करो कि किस तरह से जो है वो आप उसे फीडबैक दे रहे हो अपने बैक टू एक्सप्लेन. ओके, this is our
main program. We are going to do it together on a live session. So I will be there with you guys. अच्छा यहाँ पर देखो, we are getting a waveform which will be the altitude of your aircraft, सही है, helicopter in our case, और उसमें हमारे पास set point आ रहा होगा. Let me just do it once. Okay, we have an error here, but anyway, so we will have our set point here. ठीक है, set point you can choose to have 30 degrees and whichever you like. यहाँ पर हमारे पास PID लगा हुआ है. PID में आपको K, T एंड KI और D जो है उनकी बेसिकली जो गेन, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव है, इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके उसका जो रिस्पॉन्स है वो आपने बेहतर करना है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो है वो एयरक्राफ्ट का जो ऑल्टीट्यूड है वो शो हो रहा होगा, से कि कितना उसने अपना जो है वो इंक्रीज किया है. ऑब्वियसली वी नीड इट एट ज़ीरो बिकॉज वी वांट द एयरक्राफ्ट टू बी स्टेबल, है ना. सो स्टेबल रखने के लिए हमें वी विल नीड टू कीप इट एट ज़ीरो. Okay. Now encoder number, encoder count, we won't need that. We only need to have a feedback of our altitude here, and this is our input. Okay. So यहाँ से आप अपना altitude set point choose करेंगे. You will have your PIDs here to change. Okay, delta T also, and वहाँ से आपके पास जो भी feedback आ रहा होगा वो in terms of chart and in terms of this dial जो है वो हम लोग उसे feedback को देख रहे होंगे. ठीक है, observe कर रहे होंगे. What you're going to do is कि हमारे पास एक second, just uh, yeah, यहाँ पर ये डायल्स आ रहे हैं, डायल है हमारा, सही है, और ये हमारे पास जो है वो दिस इज या सेट पॉइंट ऑफ डिग्रीज. ठीक है. तो यहाँ पे जो डायल है उस डायल पे आपने जो आपका अम, जैसे इस लैब में हमारे पास ऑल्टीट्यूड आ रहा है, उस ऑल्टीट्यूड को आपने उस डायल में जो है वो अटैच करना है. So that is how you're going to get your output, your feedback from explain. और यहाँ से जो आप बेसिकली सेट पॉइंट दे रहे हैं, जस्ट लाइक दिस वन, यहाँ पर हमने जो सेट पॉइंट लगाया हुआ था दिस एंड दिस, इसी को यूज़ करते हुए आपने जो आउटपुट है वो भेजना है दोबारा explain पे using localhost and your IP addresses. सही है. So this is your total what you're going to do in this lab. So अभी यहाँ से let's just do one thing that हम यहाँ से जो है इसे log off करते हैं and we will move on towards the live session. ठीक है. If you guys if any questions please ask, and then we will move on towards our session where we will interface it with our explain. See, actually, you guys just like I told you, okay, we don't need our pitch and other stuff, so let's just get rid of these. Okay, real quick here. Yeah. Okay. Hmm. So yeah, so we have an altitude set point here. Anyway, so yeah, so use this. Okay, let's come back here and यहाँ पर एक एलिमेंट हम ऐड कर देते हैं. ठीक है, we can just keep them. Oh yeah, oh sorry. ये जो आपका आउटपुट है, ये this will connect to this and this will connect here. अच्छा, this is for your output. Yeah.
सो ये इनपुट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली। सो यहाँ से हम लोग ऑल्टीट्यूड को जो है वो इनपुट करेंगे इन एक्सप्लेन टू कंट्रोल इट। ठीक है, और अदर देन दैट व्हाट डू वी हैव, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स। सो ये यहाँ पर इफ यू गाइस, ये एम्प्टी एलिमेंट्स जो हैं वो हमने नहीं छोड़ने। सही है, सो लेट मी जस्ट ग्रैब देम एंड या there you go. So now you can run it. So empty elements नहीं छोड़ने, just if you're using altitude just have one element here, and altitude जो है वो हम लोग then explain को provide करेंगे using our local host IP। और altitude जब आप provide करेंगे, so you will obviously control the altitude of your helicopter and everything। और उसका जो भी फीडबैक आ रहा होगा यू विल रिसीव हियर इस पोर्ट से, इस आईपी से। पोर्ट ऑब्वियसली यू गाइस कैन चेंज। तो यूडीपी से जो डेटा आ रहा होगा उस डेटा को हमने एक्सेस किया, एंड ऑल्टीट्यूड इज ऑन एलिमेंट नंबर 24। वहाँ से ऑल्टीट्यूड जो है वो यू गाइस विल रिसीव यूजिंग आइदर द वेव फॉर्म चार्ट और दिस डायल हियर। ठीक है, so that's it, that's all you're going to do। And if you guys have any question, please ask. If not, then let's just end our session here, and we will move towards our live session. No. Okay, then let's just end our session here. Good luck, and take care, and Allah Hafiz.